children. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. So you are enjoying science class? So once again I am in front of you to teach safety and first aid. This is lesson number 6. I have told you accidents can occur anytime and anywhere. So you should be very careful all the time. Am I right? Yes. Now tell me, what is first aid? I've told you so many times. First aid is the immediate help given to a victim before the doctor arrives. Got it? And it can save somebody's life. Now we will see what is happening here. As you know, accidents can occur anytime, anywhere. So let's see this accident. Oh, what happened here? The girl got burned when she touched a hot utensil. She has got burn on her hand. इसीलिए don't touch any hot utensil. Clear? As you are very small kids. So, क्या करना चाहिए अब जब बर्न हो जाए? So, we should keep the burn area under cool water, cool running water. Why we are keeping it under cold water? क्यों रखते हैं हम बर्न पार्ट को? ताकि जो हमें उस समय बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, उससे हमको रिलीव मिल जाए. Got it? And we can do one thing more also. Put 1 teaspoon of baking soda in a glass of water. Dip cotton wool in this solution and apply it on the affected area. This will also give relief from the burning sensation. Am I clear? If the burn is major, then you should directly visit to the doctor. Got it? अगर छोटा सा बर्न है तो हम घर में बर्नॉल पहले हम अंडर वाटर उसको रखेंगे, देन हम उसको बर्नॉल लगा के ठीक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम उसे डॉक्टर को दिखाएंगे. क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन? अ बॉय इज चेजिंग द डॉग. और फिर डॉग को बहुत गुस्सा आ गया. एंग्री डॉग ने क्या किया? एंग्री डॉग ने बाइट कर लिया. कहाँ पर? लेग में. अब क्या करना पड़ेगा? नाउ when the dog, when the dog bites someone, it releases its saliva into the skin of victim, which causes the deadly disease rabies. जब एक डॉग किसी को काटता है तो वो अपना सलाइवा उसके स्किन पर छोड़ देता है, जिससे एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, दैट इज नोन एज रेबीज. तभी तो आपको इंजेक्शन लगते हैं. आपको पता है रेबीज का इंजेक्शन? और पहले तो पता है टमी में 14 इंजेक्शन लगते थे, अभी तो 3 लगते हैं. क्लियर? सो व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन व्हेन अ डॉग बाइट्स someone? So place the bitten area under running water for at least 15 minutes. आपको सबसे पहले पैर को रनिंग वाटर में रखना है ताकि उसके जर्म्स जो हैं निकल जाएं. वॉश द एरिया विथ डिटर्जेंट सोप. आपको सोप लेनी है और उससे उसको अच्छे से वॉश करना है, फिर पानी डालना है. उसके बाद में अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम. वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम लगाना है. देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर. द डॉक्टर विल गिव यू एंटी रेबीज वैक्सीन. क्लियर? तो वैक्सीन से सबको डर लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? डॉग से दूर रहना चाहिए और कभी भी डॉग को चेज नहीं करना चाहिए. डॉग को या किसी भी एनिमल को चेज नहीं करना चाहिए. Am I clear to you?
Yes. Now what happened here? There is a snake. और स्नेक ने बाइट कर लिया समवन, किसी का। जब हम कभी गार्डन में खेल रहे होते हैं, हमें स्नेक दिखाई नहीं देता है, तो कभी स्नेक काट सकता है. लेट्स हैव अ वीडियो फॉर दिस. This is Mr. John. He likes to go for an evening walk in the park. One evening, he was walking in the park, and suddenly he was bit by something. He screamed and looked around, and he realized it was a snake. He shouted for help. It is a good idea to notice the color, body scales, head, or any special characteristics of the snake, because it will help the doctor to identify the venom. If you missed it, it is okay. Do not waste your time looking for the snake or trying to kill it. The most important thing is the victim should remain calm, relaxed, and fearless. Otherwise, it will increase the blood flow and the heart rate, resulting in the rapid spread of venom. Do you know only 20% of the snakes are venomous, and there are 50% chances that venomous snakes will deliver a dry bite. Even if a snake has delivered a venomous bite, by following the correct treatment and measures, you can easily save yourself from any injury. One of John's friends came to help him and called the ambulance. He moved John to a safe place. The affected part of the victim should be kept immobile as much as possible while moving the victim, and it should be kept below the level of the victim's heart. The helper makes the victim sit on the floor with the affected legs stretched. Remove any tight-fitting clothes, any rings, wristwatch, etc. from the affected body part or on the wound itself. Otherwise, it might cause swelling. It is important not to cut the wound as it will increase the chances of infection. Do not suck the venom because it will only remove a negligible amount of venom and might also poison the helper. Do not eat or drink anything, particularly caffeine or alcohol, as it increases the heart rate and blood flow. Arrange a long bandage or clean cloth. Wrap up the wound loose enough to insert a finger and wrap it up till the top. Do not use a tourniquet, as it could potentially restrict the blood flow to the affected area. Do not use ice on the wound because it might increase the damage. Immobilize the body part with a wooden piece or a stick and tie it with a bandage or a cloth before you transfer the victim to the hospital. The doctor can then detect the venom and administer the suitable antivenom to the patient. Presence of mind in immediate treatment can save the life of the patient after a snake bite. So now you have understood how we can save if a snake bite someone. वीडियो से समझ में आ गया, अगर स्नेक किसी को काटता है तो हमें क्या करना चाहिए. क्लियर. नाउ व्हाट इज दिस. दिस इज honey bee, and we get honey from the honey bee. And where do the honey bee live? honey bee कहाँ रहती है? honey bee lives in its honey hive. कहाँ रहती है? hive में. आपको देखा ना आपने hive कैसा होता है? सबको पता है ना मधुमक्खी का छत्ता. और मधुमक्खी को अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दे तो क्या होता है? हनी बी गेट्स एंग्री. उसको बहुत गुस्सा आता है. एंड व्हेन इट गेट एंग्री, व्हाट हैपन? वो क्या करती है? हनी बी स्टिंग्स. हनी बी क्या करती है? डंक लगा देती है. एंड इट्स स्ट्रिंगर रिमेन इनसाइड द स्किन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन. अगर उसका जो डंक मारती है वो डंक अगर स्किन में रह जाएगा तो उससे हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है. क्या होता है? पेन. तो हमें क्या करना चाहिए?
scrap the string side with a fingernail or use tweezer to remove the stringer. सबसे पहले हमें उसके डंक को हाथ से नेल से निकालना चाहिए या with the help of tweezer, and then we should wash the area with antiseptic soap and वाटर. हमें एंटीसेप्टिक सोप एंड वाटर से अच्छे से वॉश करना चाहिए और पैट ड्राई एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. हमें उसे सुखा के उसमें एंटीसेप्टिक क्या लगानी चाहिए? ऑइंटमेंट. देन यू कैन पुट सम आइस क्यूब्स ऑल्सो. पहले उसको आइस क्यूब को एक पतले से कपड़े में लगाना है, फिर उस एरिया में जहाँ पर काटी है वहाँ रखना है. इससे क्या होगा? जो हमें बहुत ज़्यादा उसमें से बर्निंग सेंसेशन होती है ना जब वो काटती है, उससे हमें रिलीफ मिलता है. रीअप्लाई एवरी फ्यू आवर्स अंटिल द पेन एंड स्वेलिंग आर गॉन. और उसे हमें कुछ आवर्स तक लगाए रखना है जब तक कि स्वेलिंग और पेन चला ना जाए. एम आई क्लियर? यस. नाउ what should we do if someone fainted? देखा है आपने कई बार जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हो या फिर आप असेंबली में होते हो, अचानक से फेंट हो जाते हो. फेंट होने के रीजंस पता है? या तो बहुत टायर्डनेस या फिर आप यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट प्रॉपरली. तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? वी शुड सी ABC. Now All you see have to this remember video. is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the center of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimeters. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site, called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's I hope ABC. you have understood the And video. if